गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी जहां लोग शाम को बैठकर बातें किया करते थे। उसी गांव में सलीम भाई रहते थे। सलीम भाई खुश मिजाज और मददगार इंसान थे। गांव में कोई भी मुसीबत आती तो सबसे पहले सलीम भाई वहां पहुंचते। लेकिन एक चीज उनकी जिंदगी में कमी थी, वह नमाज नहीं पढ़ते थे। सलीम भाई और मौलाना रऊफ साहब गांव की मस्जिद के इमाम थे। एक दिन जुमा की नमाज के बाद उन्होंने सलीम भाई से कहा, सलीम भाई, आप इतने नेक इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन एक सवाल पूछूं? सलीम भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मौलाना साहब, पूछिए। मौलाना साहब बोले, आप अल्लाह की दी हुई नेमतों के लिए शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? क्यों आप नमाज नहीं पढ़ते? सलीम भाई ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, मौलाना साहब, अल्लाह मेरा दिल जानता है, मैं उसके बंदों की मदद करता हूँ, यही मेरी इबादत है। नमाज पढ़ने का वक्त मेरे पास नहीं है, काम में इतना उलझा रहता हूँ कि अल्लाह को याद करना भूल जाता हूँ। मौलाना का जवाब। मौलाना साहब गंभीरता से बोले, सलीम भाई, आपका नेक काम यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन सोचिए, अगर कोई आपको रोज रोटी देता हो और आप उसे धन्यवाद तक न कहें तो क्या यह सही होगा? नमाज उसी शुक्रिया का जरिया है। सलीम भाई थोड़ा झिझकते हुए बोले, मौलाना साहब, मुझे लगता है कि नमाज सिर्फ अल्लाह से डराने का जरिया है। अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो क्या अल्लाह मुझसे खुश नहीं होगा? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, अल्लाह किसी से डराने का नहीं, बल्कि अपने करीब बुलाने का रास्ता दिखाता है। नमाज पढ़कर देखिए, आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जैसा आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। सलीम भाई का आत्म मंथन। उस रात सलीम भाई अपनी खाट पर लेटे हुए मौलाना साहब की बातें सोच रहे थे। वह बार बार सोचते, क्या सच में नमाज से कोई फर्क पड़ेगा? मैंने तो बिना नमाज के भी ठीक जिंदगी गुजार ली है। इन्हीं विचारों के साथ वह सो गए। रात को उन्होंने एक सपना देखा। सपने में वह एक घने जंगल में फंसे हुए थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक आवाज आई, सलीम, जब तुम अल्लाह को याद नहीं करोगे तो वह तुम्हें रास्ता कैसे दिखाएगा? सपने ने सलीम भाई को झकझोर दिया। सुबह फज्र की अजान की आवाज सुनकर उनका दिल बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, चलो एक बार नमाज पढ़कर देखता हूँ। पहली नमाज। सलीम भाई मस्जिद पहुंचे। मौलाना साहब ने उन्हें देखकर खुशी से उनका स्वागत किया। सलीम भाई ने पहली बार फज्र की नमाज पढ़ी। जब वह सजदे में गए तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। बदलाव की शुरुआत उस दिन के बाद सलीम भाई ने धीरे धीरे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हर नमाज के साथ उन्हें ऐसा लगता जैसे वह अल्लाह के और करीब आ रहे हों। उनके दिल में जो खालीपन था वह अब भरने लगा था। उस दिन के बाद सलीम भाई ने धीरे धीरे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हर नमाज के साथ उन्हें ऐसा लगता जैसे वह अल्लाह के और करीब आ रहे हों। उनके दिल में जो खालीपन था वह अब भरने लगा था। कुछ महीनों बाद सलीम भाई ने मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब, आप सही कहते थे, नमाज ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे लगता है कि अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। मेरे काम में बरकत भी बढ़ गई है और दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। गांव के लिए प्रेरणा। सलीम भाई की इस नई शुरुआत ने गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उन्होंने भी सलीम भाई से प्रेरणा ली। सलीम भाई की कहानी हमें सिखाती है कि नमाज न केवल अल्लाह के करीब आने का जरिया है, बल्कि ये हमें आत्मिक शांति और जीवन में संतुलन भी प्रदान करती है। अल्लाह हमारे नेक कर्मों से खुश होता है, लेकिन नमाज वह तरीका है जिससे हम अपने दिल और रूह को सुकून देते हैं। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वह हमें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। नमाज न सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करती है, बल्कि इसके बहुत से जिस्मानी फवायद भी हैं। नमाज के दौरान मुख्तलिफ हरकत और अरकान इंसान के जिस्म पर मुस्बित असर डालते हैं। यहाँ नमाज के चंद अहम जिस्मानी फवायद बयान किए हैं। 1. पट्ठों की मजबूती और लचक। रुकुआ, क़याम और सजदा करने से जिस्म के मुख्तलिफ पट्टे हरकत करते हैं, जिससे उनकी मजबूती और लचक में इजाफा होता है। ये वर्जिश की तरह काम करती है और जोड़ों को सेहतमंद रखती है। दूसरी, खून की गर्दिश में बेहतरी। नमाज के दौरान मुख्तलिफ हरकत खून की रवानी को बेहतर बनाती हैं। सजदा के दौरान दिल के नीचे की तरफ झुकने से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो ज़हनी सेहत के लिए मुफीद है।
3. It रीढ़ is the की हड्डी की climax of सेहत a रुकवा Muslim's prayer और and सजदा is रीढ़ meant की to be हड्डी a को सीधा technique रखने and में position which मदद reason देते is हैं nearest to और his कमर prayer, दर्द help को healed कम by करते Allah the हैं। Almighty. ये रीढ़ In की the हड्डी को ever-evolving मजबूत बनाता है scientific world, और उसके we often मसाइल come को कम across करने में discoveries मददगार that साबित reveal the होता है। amazing connection between 4. religion and दिल और science. निज़ाम One तनफ़ुस such की example बेहतरी नमाज के is the दौरान research on the गहरी sujood सांसें position in लेने से prayer, which has फेफड़ों की attracted the attention कारकर्दगी of many बेहतर होती है। researchers, especially उससे in the दिल की field of धड़कन मतवाज़न neuroscience. रहती है Not और दिल only की they have सेहत found in बेहतर होती है। sujood a depth 5. spirituality, हाजमे but की also बेहतरी various सजदा tangible और medical and दीगर health हरकत से benefits. पेट के अज़लात In this मुतहर्रिक video, होते हैं we explore जो the निज़ाम scientific हाजमा को perspective बेहतर on the बनाते position हैं। of sujood ये मादे के and the मसाइल को wonders कम कर revealed सकती through है। research. 6. The sujood, वजन or का sajda, कंट्रोल नमाज is के a दौरान unique position or जिस्मानी stance in हरकत the regular कैलोरीज prayers, जलाने में मदद देती which a हैं, Muslim is supposed खास to तौर offer at पर least जब 5 नमाज times a बाकायदगी day. से और Although the सही basic अंदाज में अदा purpose की of जाए। obligatory prayers 7. is not to provide ज़हनी सुकून और exercise, दबाव में कमी yet it नमाज is के being दौरान increasingly जिस्म और recognized दिमाग को that it सुकून has मिलता है, plenty of medical जिससे advantages दबाव for the और human ज़हनी body. तनाव कम होता है। Prophet Muhammad, peace ये be upon जिस्मानी him, सेहत को said that मुतासिर prayer is a करने वाले cure for many तनाव के असरात diseases, को कम करती so है। a person who offers 8. his prayers जोड़ों के regularly मसाइल is में कमी protected from नमाज के many मुख्तलिफ ailments, अरकान some of which he may खास not तौर even पर know. रुकुआ और In an सजदा authentic hadith, जोड़ों को हरकत देने Prophet में मदद Muhammad, देते peace हैं, be upon him, जो गठिया advised या Muslims to जोड़ों के perform दर्द sujood जैसे and मसाइल ruku को कम कर calmly, सकते हैं। and to get up only when नमाज the न body has सिर्फ come to रूहानी ease. फवायद फराहम Hence, करती the है first बल्कि positive जिस्मानी effect upon a सेहत के लिए person भी who बेहद prostrates or फायदेमंद does है। sajda उसको is that he रोजाना की comes बुनियाद पर nearest to अदा करने Allah से the Almighty, जिस्मानी and और so in ज़हनी that सेहत में condition, बेहतरी आती है। he can supplicate. This is a great psychological advantage because it gives relief to the person concerned as life is full of worries. In this position, the person gets at least a transient refuge, which gives him calmness and hope. Let's now see the health benefits of the sujood position as confirmed by scientific studies. One of the most interesting studies, entitled Health Benefits of Salat, published in the Professional Medical Journal in 2016, the researchers found that Muslim prayer is important as a ritual and physical activity because all muscles of the body are activated more than any form of physical exercise without fatigue, and stimulates serenity in body and soul, and have long-term health benefits on healthy as well as on diseased people. In a study entitled An Ergonomic Study of Body Motions During Muslim Prayer Using Digital Human Modeling, the researchers compared digital models suffering from back pain with healthy ones. The results showed that the sujood movement in prayer has a positive effect on the health of the back. According to the researchers, the sujood position in prayer can improve joint elasticity and help heal back pain. In a study entitled Assessment of Heart Rates and Blood Pressure in Different Prayer Positions, published in the Journal of Physiotherapy Science in 2013, the researchers found that the sujood position increases basal metabolic rate, reduces body fat, and gives healthy body composition. This is because the process of prayer is low to moderate intensity form of regular exercise, spanning between 10 and 20 minutes up to 5 times daily. This raises the heartbeat, increasing blood flow around the body and giving strength and stamina to the heart muscles. In addition, walking from the house or place of work to the mosque for Salah earns a weekly 30 minutes requirement of exercise per day, at least 5 times per week. In 2018, in an extensive study entitled Physical Benefits of Prayer, they found that in the sujood position, the head is in a position lower than the heart, and therefore receives increased blood supply to the brain, stimulating the brain's frontal cortex, and in turn reduces the chances of brain hemorrhage and headache, and helps to reduce high blood pressure. This surge in blood supply also has a positive effect on memory, concentration, psyche, and other cognitive abilities. A biology professor from Texas in the United States is a woman who converted to Islam after researching the miracle of the sujood position. Dr. Fidelma O'Leary, who works as a professor of neuroscience at the University of Texas and a neurology doctor at hospital, was amazed by the result of her study on the nerves of the human brain. She discovered that the sujood position increases the strength of blood flow to the brain, especially to the hippocampus, a region that's crucial to memory. In fact, even though human brain makes up only 2% of the body's weight, it uses 20% of the oxygen and blood flow in the body. Therefore, increasing the brain blood flow can decrease the risk of Alzheimer's and vascular dementia, among other benefits. And one way to do this is by putting oneself in the sujood position, because in this position, the blood is pumped instantaneously to brain nerves. After this discovery of the benefits of sujood for health and other discoveries she made in her research, Dr. Fidelma pronounced the Shahada and became Muslim.
It's a very simple message. There's God. Worship God. Then she decided to share her knowledge with others through her medical practice by opening a clinic called Treatment with the Quran, where she uses verses from the Quran and recommendation from the hadith of the Prophet Muhammad in the treatment of her patients. The clinic provides various Islamic treatment methods, including the use of fasting, honey and olive oil, among others, in accordance with the instructions from the Quran and the hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The health benefits of sujood by lowering the body to the ground have been proved by various scientific studies. Here is the summary of the most important benefits. Number 1. Sujood allows adequate supply. The position of the heart is above the brain, so blood can flow better into the body. This allows an adequate supply of oxygen to the brain, which plays an important role in improving the function of billions of nerve cells in the body. Smooth oxygen flow to the brain also helps relieve headaches, sharpen the mind, and improve one's mental quality. Number 2. Improves the state of the spine and back. While prostrating, the hip joint and spine are stretched to the maximum, and this calls for the lengthening of the nerves due to the stretch experienced in the entire vertebral column. This helps curtail lower back injuries and pain, such as sciatica. Number 3. Smooth breathing. During sujood, the movement of the body that presses on the diaphragm area helps smooth breathing. This is very beneficial, especially for individuals with breathing problems or disorders. Sujood also helps to open up the respiratory tract and improve lung capacity. Number 4. The movements of ruku'u and sujood in prayer can help improve posture, increase joint flexibility, strengthen muscles, and increase the flow of blood and oxygen to various parts of the body. In conclusion, the Islamic prayer is more than a form of worship. For a believer, understanding the wisdom and benefits associated with Salah from not just a spiritual aspect, but from a physiological point of view, is truly inspirational. It helps draw us closer to our Creator out of His love and mercy for prescribing these acts of worship upon us. May Allah help us connect with Him at a deeper level, spiritually as well as physically. Assalamu alaikum.